Today we'll start the concept of fundamental principle of counting, and that is very important concept in this chapter, permutation of combination, class 11th. To explain you this, I really want to start with an example. So let's say this is the room in which there are two entrances and there are two exits. If I ask you that how many ways you can go inside and you can exit, so how many ways are there? So you might answer that okay, this one way, this is another way. So two way you can see here, but two ways more can be there. I can use different pen for that. And this you move from this gate and you out from this gate, and this is another way. So in total there are four ways of moving in and going out. Now similar type of situation we can again consider. So this time we are increasing number of entrances and we are increasing number of exits. So this is 1 2 3 and this is, let's say, 1 2 3 4. There are 3 entrances and 4 exits. So if I would like to ask from you that how many ways are there, then your answer should, you just think of how many ways are there to go inside and move out from this room. I think some of you might have calculated. There are 12 ways. But how these 12 ways? Here you see that entrance were 2 and exits were 2, and your answer was 4 ways. Here entrance are 3, exits are 4, and your answer is 12. And let's see what are these 12 ways. So start from here. This is one way, this is another way, second, this is third, this is fourth way. And similarly 1 2 3 4. From here also 1 2 3 4. So in total you have 12 ways to move inside and move out from these exits. So you can see some pattern that here 2 answer was 4, here 3 and 4 answer is 12. So you must have got the idea that you have to just simply multiply and you'll get the answer. If you have generalized this pattern, then whatever number of entrance I give you, let's say this is 1 2 3 4 5, and there are 1 2 3 4 5 6. There are 6 exits and 5 entrance. So those who have observed the pattern can answer me there are 30 ways of going inside and moving out. So the thing that you are multiplying these options. There are 3 options to enter, there are 4 options to exit, there are 4 options to enter, there are 6 options to exit. So that is, and you are doing multiplication among the numbers to get the total ways. So that is your fundamental principle of counting. So let's start with some problems. You will understand this even much better. Okay, now see question number 2, exercise 7.1. How many 3 digits even numbers can be formed from the digits? Even numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated. So just let's think of, this is the 3 digit number. Let's say this is first, this is second, and this is third. This is unit place, this is 10th place, this is 100th place. So we have to make number even. So I have options for this place 2 4 6. So number of choices, I'm just indicating here number of choices. For this place we have only 3 choices. We cannot fill any other number other than 2 4 6. So for this place, now in this question it's given that you can repeat number. So
I can repeat all these 6 number because all numbers can be repeated here. But here you see 1 cannot be there, here 3 cannot be there, here 5 cannot be there. So for this last place we have only 3 options, and for this we have again 6 options. So using the fundamental principle of counting, if I want to find total number of 3-digit even numbers, then I can find by using the multiplication. But how to write that into the statement, I am just mentioning this, that unit place, tenth place and 100th place places can be filled with 3, 6 and 6 choices. So therefore by fundamental, you can write in short, a fundamental principle of counting, total 3-digit even numbers are 6 into 6 into 3. So 6 into 6 into 3, if you do your 6, this is 36 into 3, 18, 8, carry 1, and this is 108. Now consider this question number 3. How many 4-letter code can be formed using 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? This case we have to make 4-letter code, like this is 1, this is 2, this is 3, this is, let's say, 4. So these 4 boxes that you are seeing can be filled with 10 letters, and this condition is given that you cannot repeat the letter. So start from here. For this place you can fill with 10 choices, मीन्स आपके पास जो 10 अल्फ़ाबेट्स हैं आप उसमें से किसी को भी इसमें डाल सकते हैं. तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो 10 है. सो यू रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम हमेशा बात करेंगे चॉइसेस की. यहाँ पर फिल तो एक ही लेटर होगा, एक अल्फ़ाबेट ही होगा, बट हमें वो सारे वर्ड्स देखने हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जो क्वेश्चन में गिवन है. सो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो पहला प्लेस है उसके पास जो चॉइसेस होंगी वो आपकी 10 चॉइसेस होंगी, और फिर उसके बाद जो सेकंड प्लेस है उसके लिए आपके पास केवल 9 चॉइसेस रह जाएंगे क्योंकि एक लेटर आप यहाँ पर यूज़ कर चुके होंगे. फिर इसके लिए आपके पास 8 बचेंगी और इसके लिए आपके पास 7 बचेंगी. सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट कई बार बच्चों को समझ में आता नहीं है. इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ कि अगर एक क्लास में आपकी 4 चेयर्स हैं, मान लीजिए क्लास में 4 चेयर्स हैं और क्लास में जो क्लास के बाहर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, मान लेते हैं क्लास के बाहर 10 बच्चे खड़े हुए हैं. तो पहली चेयर पर आपको अगर बिठाना है तो उन 10 में से किसी एक को बिठा सकते हो. तो पहली चेयर को अगर फिल करना है तो आपके पास 10 तरीके हैं. 10 बच्चों में से किसी एक को बिठा सकते हो. बैठेगा तो एक ही, रिमेंबर दिस, बैठेगा एक ही बच्चा, बट आपके पास जो चॉइसेस होंगी वो टोटल आप उसको बोलोगे कि आपके पास 10 चॉइसेस हैं. ओके, इसके बाद एक सीट आपकी फिल हो गई तो आपको अब 3 सीटें बची हुई हैं. अब तीसरी सीट को फिल करना है तो आपके पास जो बाहर बच्चे खड़े होंगे वो 9 बच्चे हैं. 9 में से किसी एक बच्चे को आप उस पर बिठा सकते हो. तो आपको थर्ड सीट को फिल करने के लिए 9 चॉइसेस हो जाएंगी. जब उस पर भी कोई बच्चा बैठ जाएगा तो 2 बच्चे ऑलरेडी बैठ चुके हैं और 2 चेयर आपकी खाली है. अब एक सेकंड जो चेयर है, सेकंड लास्ट चेयर जो है, अब उसको उस पर अगर को बिठाने हैं बच्चे तो बाहर जितने खड़े हुए उसमें से किसी को बिठा सकते हैं. मतलब बाहर आप खड़े हुए 8 बच्चे, तो 8 में से किसी एक को आप उसमें बिठा सकते हो. तो थर्ड जो चेयर है, सेकंड लास्ट चेयर जिसका हम बात कर रहे हैं, उसमें आप 8 बच्चे बिठा सकते हो. इसी तरीके से जब आप लास्ट चेयर जो बचेगी उसके लिए आपके पास जो चॉइसेस होंगी वो 7 होंगी. तो सारी टोटल अगर वेज देखेंगे तो आपके पास 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 करने से आएगा. सिमिलरली ये भी वही क्वेश्चन है. सो अब हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ places from last can be filled with 10, 9, 8 and 7 choices. So by fundamental, you can write simply by fundamental principle of counting, total
4 letter codes are 10 into 9 into 8 into 7. You simply multiply. This is 90 and this is 56. 9 6 56, 56 6 54 and carry 5, 9 5 ja, then 45 45. This is, so this is 4 5 0 4 and one more 0. So there are total 4 letter codes are possible. Now see question number 4. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6 7? So now you see there are 5 digits number required and these two boxes can have only 6 and 7 because question is saying this. तो इसका मतलब जो इस प्लेस के लिए जो हमारे पास चॉइसेस हैं केवल 1 चॉइस है, इस प्लेस के लिए हमारे पास केवल 1 चॉइस है एंड बाकी पे देखते हैं कितनी चॉइसेस हमारे पास बचती हैं. क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, एक डिजिट जो एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आएगी. तो इसका मतलब टोटल 9 डिजिट्स हैं. 0 to 9 में हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं जिसमें से कि आपने 2 डिजिट्स को यूज़ ऑलरेडी कर लिया है. तो अब आपके पास जो डिजिट्स बचती हैं वो आपके पास डिजिट्स बचती हैं 8. तो अब इसको अगर आपको फिल करना है तो आपके पास 8 चॉइसेस हैं, किसी एक से इसको फिल कर सकते हैं. सिमिलरली इसको जब फिल करना होगा, एक आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, एक आपने यहाँ यूज़ किया, 3 यूज़ हो चुके हैं तो आपके पास बचेगी 7 और फिर इसके लिए बचेगी आपके पास 6. तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल 5 digit numbers starting from 67 are, simply you multiply 8 into 7 into 6. So this is 56 into 6 multiply 636, 6 carry 3, 6 5 30. This is 336. Now start with this question number 6. Now in this question some situation is altogether different. Some of you might get confused that there are, I'm just explaining the question first. आपको 5 फ्लैग्स गिवन है, डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं. तो डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स आपको उससे सिग्नल्स बनाने हैं और एक सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट कलर्स की ज़रूरत होती है और जो एक के नीचे दूसरा कलर आप उसको एडजस्ट करेंगे. तो अगर आप देखिए आपका ये आपको इस तरह का आपने कुछ फ्लैग बनाया जिसको आप सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ जो कलर होगा वो एक कलर टाइप का होगा और जो यहाँ होगा वो कलर दूसरे टाइप का होगा, क्योंकि आपके पास फ्लैग 5 ही है. 5 में से पहला एक फ्लैग चूज़ कर लेंगे. 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं तो एक चूज़ करने के लिए यहाँ पर जो इस ऊपर वाले के लिए आपके पास जो चॉइसेस होंगी वो 5 होंगी. अब 5 हैं आपके पास डिफरेंट कलर जिसमें से एक कलर आपने यहाँ यूज़ कर लिया. तो अब जो इसको आपको यूज़ करना होगा मतलब इस प्लेस के लिए, उसके लिए आपके पास बचेंगे ओनली 4 कलर्स के. तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यू विल गेट 20 signals that you can generate from 2 flags. So by FPC 5 into 4 which is 20 signals can be generated. Okay, next we'll understand what is factorial. So I start with some example. So let's say example is 4 factorial. This is, you have to pronounce it as 4 factorial. So this is 4 into 3 into 2 into 1. So you can simplify this. This is 24. So 4 factorial means 24. Now 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is 120. Also you can see that this number you have already used this for 4 factorial. So this can be written as 5 into 4 factorial. So now if I say you what is 2 factorial, then you will write 2 into 1 which is 2 and 1 factorial is 1 only. So this is these are some examples of factorial.
Now in generally we represent factorials from this n factorial is n minus 1, n minus 2, and that dash we go up to 1. So this is the representation of general representation of a factorial. So from here if you into this formula, if you put n equals to 1, or you just we can write it further also, that n factorial we can write here n factorial as n, and I can stop here and I can write just factorial. Now in this you put n equals to 1, so what do you get? That 1 factorial is equal to 1 bracket 1 minus 1 0. 1 minus 1 means 0 factorial. This is 1 factorial, you know this 1 factorial is 1, this is 1, and this is 0 factorial. So remember this is not 0, this is 0 factorial. So you have to take it completely as 0 factorial. So from here 0 factorial you will get 1 divided by 1 as 1. So this way you have seen that 0 factorial is also 1. Now if I say that sum, if I do 2 factorial plus 3 factorial, is it equal to 5 factorial? So you have to verify, no, it is not equal to 5 factorial, because you can see this is not equal to 5 factorial. So 2 factorial means plus 3 factorial, you take LHS. So this is 2 plus 3 factorial means 3 factorial we already, you just can calculate again, 3 into 2 into 1. So this is 6, and 6 plus 2, this is 8. Whereas 5 factorial is equals to 120. You have seen this above. So it simply means that 2 factorial plus 3 factorial is not equal to 5 factorial. Similarly, difference of any 2 factorial, this is 3 factorial minus 2 factorial, cannot be equals to 1 factorial. And this implies for product also, that 3 factorial into 2 factorial is not equal to 6 factorial, and this is for division also, that 4 factorial upon 2 factorial is not equal to 2 factorial. So this factorial do not possesses any mathematical operations. This is very important to just see that here in this general form of n factorial, this n belongs to whole number. It cannot be fraction, it cannot be real, it is a whole number. And please, if you have liked this video, please share, subscribe. Thank you.